घंटे में 149 लोगों की मौत, 29,181 केस हुए दर्ज। भगवत मान की कैबिनेट का शपथ ग्रहण आज। थोड़ी देर में हरपाल चीमा, मंजीत कौर और समेत 10 विधायक बनेंगे मंत्री। 25 मार्च को होगा योगी का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी और अमित शाह भी होंगे शामिल। नामी उद्योगपति और धर्माचार्यों को भी न्योता। उत्तराखंड के सीएम के नाम पर बीजेपी में मंथन जारी। पुष्कर सिंह नामी रेस में आगे, राजनाथ सिंह बनाए गए उत्तराखंड के केंद्रीय पर्यवेक्षक। यूपी चुनाव को लेकर शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी पर आरोप। कहा भाजपा की बेईमानी और चालाकी से हुई सपा गठबंधन की हार। नमस्कार, स्वागत है आपका रीजनल एक्सप्रेस पे। मैं हूं आपके साथ हारिस। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के लिए एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह की योजना बना रही है, जो अगले सप्ताह लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तारीख में बदलाव हुआ है। ये कार्यक्रम 21 की जगह अब 25 मार्च को होगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने की संभावना है, जिसमें हजारों की संख्या में आमंत्रित लोगों की सूची होगी। उत्तर प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शाम 4 बजे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। पार्टी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित लोगों की एक सूची तैयार कर रही है और मेहमानों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल होंगे, जिन्हें लाभार्थी कहा जाता है। उन्होंने इस भाजपा को सत्ता में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टेडियम में करीब 200 वीवीआईपी के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्ष सहित कुछ प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। तैयारियों का निरीक्षण कर रहे अधिकारियों ने बताया कि समारोह शैली और भव्यता में बेजोड़ खबर है कि योगी के शपथ समारोह में विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। संभल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 4 किशोर गंगा में स्नान करते समय डूब गए। वहीं स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर किशोरों को निकाल लिया है, जिसमें एक की मौत हो गई है। वहीं होली पर इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो 4 लोग हैं, नहाने गए थे वहाँ पे और भी नहा रहे थे वहाँ पे थोड़े और, मतलब हमें टांग फिसली, मतलब नहान तो गए, मतलब एक बार लिख रहे थे, दोबारा नहाने निकल गए जी। तो उनके संग में बह गए, मतलब मैं भी गया था। तो उसके बाद मैं तो निकल गया, वहाँ के बाद फिर मैंने एक और खींच लियो, तो फिर 2 चले गए, फिर वो लिख रहे आओ। उसके बाद हम वो गए, चलो वो शेरा। अच्छा, जो जिसकी मौत हुई वो आपके गांव के थे? गाँव के। वो आपके ही साथ नहा रहे थे? हाँ, साथ में। अच्छा, ये 2 लोग कहाँ के थे? ये मतलब मालूम है। अच्छा, 2 लोगों की आपको जानकारी नहीं? तो वहाँ किसी ने आपको बचाया था, निकाला था उसमें गंगा जल में से? मतलब मैं थोड़ा बहुत जान से चला ना, तो मैं लिख लिया। अच्छा, और उनके लिए? वे तो अपने आप लिख लिया है ना। जिसकी मौत हुई है उसको किसने निकाला? उसको बतासे वाली की दुकान है ना, वहाँ निकाला। ये ग्राम असफपुर में एक कच्चा घाट है, जिसपे बार बार लोगों को मना किया जाता है कि ये प्रतिबंधित घाट है, यहाँ पर नहाना है। प्रशासन द्वारा बार बार मना करने के पश्चात भी आज 4 बच्चे वहाँ नहाने गए थे, जिसमें एक सुनील नाम के व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 3 को सफल निकाला चुका है।
उधर मैनपुरी सर्विलांस टीम और घिरोर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। घिरोर थाना पुलिस ने कैंटर में भरकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा 5 कुंटल अवैध गांजा जसराना तिराहे से बरामद किया है। पकड़े गए अवैध गांजे की कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लेने के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये शासन स्तर से, क्योंकि होली के अवसर पर मादक पदार्थों का काफ़ी सेवन होता है, तो उसी दृष्टिकोण से हमारी सर्विलांस की टीम और इधर घिरोर की टीम, साथ में अन्य थानों की भी टीमें जगह जगह पर सक्रिय चेकिंग कर रही थी। उसी क्रम में ये फिरोजाबाद बॉर्डर पर एक मिखबर की सूचना और सर्विलांस के आधार पर एक गिरोह को पकड़ा गया। ऐसा कैंटर एक ट्रक, साथ में उसमें 14 बोरियों में लगभग 5 कुंटल गांजा, जो कि यद्यपि ये कैरियर्स हैं और ये किसी को सप्लाई करने के फिराक में थे। अभी पूछताछ इससे आगे की जा रही है। और इसमें मुकेश मौर्य, जो कि सिद्धार्थनगर जनपद का रहने वाला है, और दूसरे मुकेश कुमार, ये फिरोजाबाद का रहने वाला है। ये दोनों ट्रक ड्राइवर्स, ये 2 गिरफ्तार किए गए हैं। लगभग 75 लाख रुपए कीमत का ये जो गांजा है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। और ये कैरियर्स है, इनके कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, इसके बारे में अभी सक्रिय पूछताछ आगे की जाएगी। पूरी टीम ने मादक पदार्थों के रैकेट्स को पस्त किया है। 125,000 रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा। वहीं अयोध्या शहर के चौक स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह के 120 बच्चों को होली के पर्व पर जेसीआई सिटी अयोध्या के अध्यक्ष सुप्रीत कौर के नेतृत्व में रंग, गुजिया, मिठाई, फल का वितरण किया गया है। इस मौके पर जेसीआई सिटी के मनीष गोयल, रोहित अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, गगन जायसवाल, स्वप्निल रस्तोगी, राघव बंसल मौजूद रहे। वहीं जेसीआई सिटी अध्यक्ष सुप्रीत कौर ने कहा कि होली के पर्व पर राजकीय संप्रेक्षण गृह के 120 बच्चों को अपने हाथों से रंग, अबीर, गुलाल, मिठाई, गुजिया व फल का वितरण किया गया है। बच्चे होली का उपहार पाकर बहुत ही खुश दिखाई दिए। जेसीआई अयोध्या सिटी ने बाल सुधार गृह में आकर बच्चों को मिठाई का वितरण किया है, फल का वितरण किया है और अबीर का वितरण किया है। जेसीआई अयोध्या सिटी धन्यवाद देना चाहता है यहाँ के जेलर मिश्रा जी को, यहाँ के सारे स्टाफ को, जिन्होंने हमारा सहयोग किया है बच्चों को बांटने में। और यहाँ पे जो बच्चे हैं, मैं उनके लिए ऊपर वाले से यही कामना करता हूँ कि जल्दी वो यहाँ से छूटें और बहुत जल्दी हमारे समाज का हिस्सा बने। वहीं होली के मौके पर पूरा यादव परिवार एक साथ जमा होता है। सैफई में पूरे परिवार ने होली खेली। इस दौरान सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव मौजूद रहे। अखिलेश यादव होली के मौके पर पिता मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। उन्होंने प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर एमएलसी चुनाव में बेईमानी नहीं हुई तो हम सभी सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की बेईमानी, लोकतंत्र की हत्या के पीछे अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता हमारे साथ है, छात्र, नौजवान सभी लोग हमारे साथ हैं, भाजपा को हटाएंगे। और पूरा देश के लोग आज त्योहार को धूमधाम से मना रहे हैं, तो हमारे पूरे देशवासियों को सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं। मिलजुल करके होली खेलें, मिलजुल करके खुशियाँ मनाएं, ये हमारी शुभकामनाएं। चाचा, पूरा परिवार मंच पे इकट्ठा हो रहा है, पहली बार पंडाल में होली मनाई जा रही है, इसको किस तरह देखते हैं?
हर साल इकट्ठे ही होते जी। हैं, आज भी इकट्ठे होंगे जी सब लोग रहेंगे, खूब होली खेलेंगे लोग खुशी के साथ। जी। नतीजों के बाद जो निराशा है कार्यकर्ताओं में, वो कहीं ना कहीं आज दूर हो जाएगी परिवार को एक साथ देख के। देखिए वैसे तो परसेंटेज बढ़ा, वोट भी बढ़ा जी वोट भी बढ़ा। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी और चालाकियाँ, सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या हुई है, बेईमानी हुई है जी और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें बेईमानी में पूरा सहयोग दिया है। फिर निराशा कई बार, जनता मेरे साथ है, जी पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ है, किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान और महिलाएं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है। अब निकलेंगे, लड़ेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि सैनिटरी के सेलिब्रेशन पर क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। 15 within a span of 14 months, the largest vaccination program since independence. Prime Minister calls himself Pradhan Sevak, the prime public servant. Under the umbrella term of Sabki Saath Sabki Vikas, he envisions a prosperous vision for various sections of the society. Modi ji is one of the world's most tech-savvy leader. A peerless social media influencer with massive following. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, please join me in welcoming our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I request the Prime Minister to inaugurate Mathrubhumi's year-long centenary celebration. Thank you very much. Managing Director of Mathrubhumi, Shri M.B. Shreyams Kumar ji, the entire team and leaders of Mathrubhumi, distinguished guests, Namaskaram. I am glad to be addressing this program to mark the centenary celebrations of Mathrubhumi. On this occasion, my greetings to those associated with this newspaper. I also recall the contributions of those who have previously worked in this media house. Several leading lights such as Sri K.P. Keshav Menon, K.A. Damodar Menon, Kerala Gandhi, Sri K. Kelappanji, and Karul Nilkandan Namudripadji have been associated with Mathrubhumi. I would like to remember MP Virendra Kumar,
who oversaw the rapid growth of Matrabhumi. We will never forget his efforts to uphold India's democratic ethos during the emergency. He was a great orator, scholar, and was passionate about the environment. Friends, inspired by Mahatma Gandhi's ideals, Matrabhumi was born to strengthen India's freedom struggle. Matrabhumi is a key part of the glorious tradition of newspapers and journals founded all across India to unify the people of our nation against colonial rule. If we look back at our history, several grades have been associated with some or the other paper. Lokmanya Tilak nurtured Keshri and Maratha. Gopal Krishna Gokhale ji was associated with Hitwad. Prabuddha Bharat was associated with Swami Vivekananda. When we remember Mahatma Gandhi, we also remember his works in Young India, Navjivan, and Harijan. Shyamji Krishna Verma edited the Indian Sociologist. I've just given a few examples. The list is endless. Friends, if Matrabhumi was born during India's freedom movement, the centenary celebrations are taking place when India is making Azadi Ka Amrit Mahotsav. We did not have the opportunity to sacrifice our lives during the freedom struggle or for Swaraj. However, this Amrit Kal gives us the opportunity to work towards a strong, developed, and inclusive India. For any nation to develop, making good policy is one aspect, but to enable the policies to succeed and to ensure that large-scale transformation take place, active participation from all walks of society is needed. For that, the media played a critical role. In these years gone by, I've seen the positive impact the media can play. The example of the Swachh Bharat mission is well known. Every media house took up this mission with great sincerity. Likewise, the media has played a very encouraging role in popularizing yoga, fitness, and Beti Bachao, Beti Padhao. These are subjects beyond the domain of politics and political parties. They are about making a better nation in the coming years. In addition to this, there is more that can be done keeping in mind Azadi Ka Amrit Mahotsav. These days, we are seeing that people are highlighting lesser known events of the freedom struggle and unsung freedom fighters. The media can be a great means to further amplify this. In the same way, every town
or village had places associated with the freedom movement. Not much is known about them. We could highlight those places and encourage people to visit them. Can we encourage the upcoming writers from non-media backgrounds and give them a platform to showcase their writing skills? One of India's biggest strengths is our diversity. Can we think about making key words of other languages popular through your media properties? Friends, in today's day and age, the world has many expectations from India. When the COVID-19 pandemic hit our shores, it was speculated that India would not be able to manage things well. The people of India proved these critics wrong. We used the last 2 years to improve the health of our society and the health of our economy. For 2 years, 80 crore people got access to free ration. 180 crore doses of vaccines have been administered. In a time when many nations are unable to overcome vaccine hesitancy, the people of India have shown the way. Powered by India's talented youth, our nation is moving towards Atmanirbharta or self-reliance. At the core of this principle is to make India an economic powerhouse that caters to domestic and global needs. Unprecedented reforms were brought in which will boost economic progress. Production-linked incentive schemes were introduced in different sectors to encourage local enterprise. India's startup ecosystem had never been more vibrant. Youngsters from Tier 2, Tier 3 towns and even villages are doing excellent work. Today, India is leading the world in the field of technological advancement. In just the past 4 years, the numbers of UPI transactions have increased over 70 times. This shows the eagerness of our people to embrace positive changes. Friends, we fully understand the importance of next generation infrastructure. Rupees 110 lakh crore are being spent on a national infrastructure pipeline. PM Gati Shakti is going to make infra creation and governance more seamless. We are actively working to ensure every village of India has high-speed internet connectivity. The guiding principle of our efforts is to ensure the future generations lead a better lifestyle than the present ones. Friends, years ago, when Mahatma Gandhi visited Matrubhumi, he had said, and I quote, "Matrubhumi is an institution that has stood firmly
on its own feet. Only can a few newspapers in India do this. Hence, among the newspapers of India, the Mathrubhumi has a unique position, unquote. I am confident Mathrubhumi will live up to these words of Babu. I once again congratulate Mathrubhumi for their centenary celebrations and convey my best wishes to the readers. Thank you. Jai Hind. Namaskaram. इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।